Hello all of you, welcome to QA Studio channel. In previous lecture, we have seen some question regarding Selenium interview question. Now we will see the practical interview question related Selenium interview. So our first question is, how do you ensure the required page is display or not? Means in this question, we have to see that the page is display or not. So we have the following checkpoint to validate the required page is display or not. First is using title of the page, using URL of the page, or we can look at any unique element on the page. So first we will see that title of the web page. You all of know how we retrieve the title of the page, that with the help of get title. So first we will set the property of the driver like webdriver.gecko.driver. Here we are using Firefox driver, so here we will write the gecko. Then we have to open the URL like driver.getwww.google.com. Then we have to find the username, then password, and also we locate the button element. So we have to perform the click operation on it. As we perform the click operation on the web page, the page will open the home page. Means suppose these are the login page, and here this URL. As we perform the click operation, the new web page is open. So now we have to locate the unique element, or we have to locate the title of that page. Also we can locate the URL of that page. If we have to retrieve the title of the web page, then we will use the driver.getTitle method. And as we driver.getTitle method, it return the string, so we will store in the any string data type, and now we have to compare that expected title and the get title is uh, match or not. For that we will use the if condition, and in the if condition we give the actual title. Actual title means our title, which will be retrieved by the get title method. Get title method is a method of the WebDriver method, and then we will compare the expected title and actual title, and if it is same then home page is display, or if it is not same then home page is not display. So पहले हमने गीको ड्राइवर यूज किया है, इसलिए यहाँ पे हमने गीको यूज किया है. फायरफॉक्स ड्राइवर एक कंस्ट्रक्टर है फायरफॉक्स ड्राइवर क्लास का. देन हमने यहाँ पे एक पहला पेज है हमारा, यहाँ पे हमको लॉगिन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसलिए हमने यूजर नेम लोकेट किया है, यूजर नेम का टेक्स्ट बॉक्स लोकेट किया है, पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स लोकेट किया है, फिर क्लिक ऑपरेशन किया है. एंड विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर डॉट गेट टाइटल, ए मेथड है वेब ड्राइवर की. विद द हेल्प ऑफ ए गेट ड्राइवर मेथड, ए जो हमें रिट्राइव कर रहा है एक स्ट्रिंग रिट्राइव करता है करके देता है, इसलिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज कर रहे हैं. और ये एक वेरिएबल बनाया है एक्चुअल टाइटल का. अभी हमने गेट टाइटल रिट्राइव कर लिया है, अभी हमको एक कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन के लिए हमने इफ कंडीशन यूज किया है. इफ एक्चुअल टाइटल कंटेन्स एक्सपेक्टेड टाइटल, यहाँ पे हम इक्वल भी दे सकते हैं, इक्वल 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 इग्नोर केस, ये सब स्ट्रिंग के मेथड है. कंटेन्स इक्वल और इक्वल इग्नोर केस, ये सब स्ट्रिंग का मेथड है. इससे हम एक कंपेयर कर रहे हैं अपना एक्सपेक्टेड टाइटल और एक्चुअल टाइटल. इथे आपण गिको ड्रायव्हर यूज करत आहे, त्यासाठी आपण गिको यूज केलेला आहे, GECKO. जसं आपण क्रोम ड्रायव्हर क्लास यूज केला तर इथे आपल्याला क्रोम लिहावं लागतं, तसं इथे आपण गिको लिहित आहे. आणि फायरफॉक्स ड्रायव्हरचा क्लास कन्स्ट्रक्टर यूज केलेला आहे. त्यानंतर आपल्याला लॉगिन ऑपरेशन परफॉर्म करायचं आहे, त्यामुळे इथे लॉगिनचा टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स आपण लोकेट केलेला आहे. आणि आपल्याला लॉगिन बटनवर क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म करायचं आहे, त्यामुळे आपण लॉगिन बटनवर पण क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म केलं आहे. त्यासाठी फाइंड एलिमेंट्स ह्या मेथड यूज केल्या आहे. या फाइंड एलिमेंट्स मेथड हे एक सर्च कंटेक्ट जे सुपरमोस्ट इंटरफेस आहे आपलं सेलेनियम आर्किटेक्चरमधला, त्यामधला या मेथड आहे. त्यानंतर आपण ड्रायव्हर डॉट गेट टायटल मेथड यूज केलेली आहे. ड्रायव्हर डॉट गेट टायटल मेथड ही वेब ड्रायव्हर इंटरफेसची मेथड आहे, आणि हे मेथड यूज करून आपल्याला कोणत्याही एक पर्टिक्युलर पेजचं टायटल मिळू शकते. आणि हे टायटल आपण एका स्ट्रिंग डेटा टाईपमध्ये ॲक्च्युअल टायटल या नावाच्या व्हेरिएबलमध्ये सेव्ह केलेलं आहे. आता आपल्याला
दोन टायटल एक्सपेक्टेड टायटल आणि आपल्याला जे टायटल मिळत आहे ते कंपेअर करायचं आहे. त्यामुळे आपण इथे इफची कंडिशन यूज केलेली आहे. इफच्या कंडिशनमध्ये कंटेन्स, इथे केव्हा आपण इक्वल टू और इक्वल इग्नोर केस ह्या मेथड पण यूज करू शकतो. कंटेन, इक्वल टू अँड इक्वल इग्नोर केस ह्या मेथड स्ट्रिंगच्या आहे. जर आपलं ॲक्च्युअल टायटल आणि एक्सपेक्टेड टायटल जर सेम असेल तर आपल्याला तिथे आउटपुट दिसेल कन्सोलवर होम पेज इज डिस्प्लेड, आणि जर इथे जर ते सेम नसेल तर आपल्याला मेसेज दिसेल कन्सोलवर होम पेज इज नॉट डिस्प्लेड. Now we have to validate the page by using current URL. To retrieve the current URL, there is a method of the WebDriver interface like driver.getCurrent URL. Also in this page, we have to perform the login operation on one page. As we perform click operation, then page will move to the next page like a home page. And this is our login page. First, we locate the element for the login, but a login button, that username, password, and login button. And as we perform the click operation, it will move to the next page, that is home page. And now we have to retrieve this page URL. So there is a method in the WebDriver interface like driver.getCurrent URL. Again, we have to compare the actual URL and expected URL with the help of the if conditions. And if our condition is true, there is a we have to display the message like home page is displayed. And if our URL is not same, that time the message will be the home page is not display. सो हमें नेक्स्ट हमें कंडीशन हमें रिट्राइव करना है गेट करंट यूआरएल मीन्स करंट यूआरएल ऑफ द पेज. सो पहले हम लोगों को लॉगिन ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करना है. लॉगिन ऑपरेशन परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ फाइंड एलिमेंट्स. तो पहले हमने एक यूज़र नेम को लोकेट किया है, देन पासवर्ड को लोकेट किया है और देन बटन को लोकेट किया है. बट उस बटन लोकेट करने के बाद हम जैसे हम क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम नेक्स्ट पेज पे मूव होते हैं और वो हमारा होम पेज रहेगा. अभी होम पेज पे आने के बाद हमको गेट यूआरएल, ये जो मेथड है, ये गेट यूआरएल मेथड है, ये जो वेब ड्राइवर की मेथड है, उससे हम गेट करंट यूआरएल फेच करेंगे, रिट्राइव करेंगे और एक पर्टिकुलर वेरिएबल में हम सेव करेंगे. सेव करने के बाद अभी हमको एक्चुअल यूआरएल और एक्सपेक्टेड यूआरएल कंपेयर करने हैं, तो हम इफ की कंडीशन यूज़ करेंगे. अगर हमारा एक्चुअल यूआरएल और ये एक्सपेक्टेड यूआरएल सेम रहेगा तो वहाँ पे कंसोल पे मैसेज आएगा होम पेज इज डिस्प्ले. अगर ये सेम नहीं रहेगा तो वहाँ पे मैसेज आएगा होम पेज इज नॉट डिस्प्ले. आता आपण करंट URL या मेथडनी एका पर्टिक्युलर वेब पेजचं करंट URL फेच करू शकतो. आणि करंट URL फेच करण्यासाठी तिथे वेब ड्रायव्हरची मेथड आहे, त्याला म्हणतात driver.getCurrent URL. सो पहिले आपल्याला एका लॉगिन पेजवर ऑपरेशन परफॉर्म करायचं आहे. जसं पहिले आपल्याला युजर नेम बॉक्स लोकेट करायचा आहे, पासवर्ड बॉक्स लोकेट करायचा आहे, नंतर बटनला लोकेट करून क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म करायचं आहे. जसं आपण क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म करतो तसं आपल्याला होम पेज ओपन झालेलं दिसेल आणि आपल्याला ह्या होम पेजचं एक पर्टिक्युलर URL मीन्स गेट करंट URL फेच करायचं आहे. आणि त्यासाठी एक मेथड आहे वेब ड्रायव्हरमध्ये, त्याला म्हणतात गेट करंट URL. आता हे गेट करंट URL एक स्ट्रिंग आपल्याला रिटर्न करते, म्हणून आपण एक व्हेरिएबल तयार केलेला आहे ॲक्च्युअल URLचा. आणि हे आपल्याला एक एक्सपेक्टेड URLशी कंपेअर करायचं आहे, त्यासाठी आपण इथे इफची कंडिशन यूज केलेली आहे. हे इफची एक्सपेक्टेड URL आणि ॲक्च्युअल URL हे कंपेअर करेल विथ द हेल्प ऑफ कंटेंट्स मेथड. हे एक स्ट्रिंगची मेथड आहे. आपण इक्वल टू पण यूज करू शकतो इथे, किंवा इक्वल इग्नोर केस मेथड पण यूज करू शकतो. त्याने पण आपण हे दोन URL कंपेअर करू शकतो. जर आपल्या दोन्ही URL सेम असेल तर इथे कन्सोलवर मेसेज दिसेल होम पेज इज डिस्प्ले. जर URL सेम नसेल तर आपल्याला कन्सोलवर मेसेज दिसेल होम पेज इज नॉट डिस्प्ले. नाव द नेक्स्ट टाईप आहे आपल्याला पेजला व्हॅलिडेट करण्यासाठी युनिक इलिमेंट. विथ द हेल्प ऑफ एनी युनिक इलिमेंट आपण पेजवर एक युनिक इलिमेंट लोकेट करू शकतो. त्यासाठी आपल्याला पेजवरचा एक कोणता पण युनिक इलिमेंट लोकेट करायचा विथ द हेल्प ऑफ फाइंड एलिमेंट्स मेथड. आणि आपल्याला ते परत कंपेअर करायचं आहे, किंवा आपण कंपेअर पण करू शकतो, किंवा विथ द हेल्प ऑफ इज डिस्प्ले मेथडनी पण तो एक युनिक इलिमेंट काढू शकतो. त्यासाठी सगळ्यात पहिले आपण युजर नेमला लोकेट केलेलं आहे, पासवर्डला लोकेट केलेलं आहे, नंतर क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म केलेलं आहे. विथ द हेल्प ऑफ driver.findElement मेथडनी त्या एका युनिक इलिमेंटला लोकेट केलेलं आहे. इफ जर तो इलिमेंट जर डिस्प्ले असेल तर होम पेज इज डिस्प्ले असा आपण एक कन्सोलवर मेसेज पुट केलेला आहे. आणि जर तो इलिमेंट डिस्प्ले नसेल तर होम पेज इज नॉट डिस्प्ले असा मेसेज कन्सोलवर पुट होईल. सो
With the help of unique element, we have to locate the unique element on the web page. So first we locate the username text box, password text box with the help of find element method. Then we will locate the button with the help of find element method and perform the click operation. Then we have to locate any unique element and we locate the unique elements. And if this unique element is displayed, then our home page is displayed, or if the unique element is not displayed, then our home page is not displayed, and it will print the any message on the console like home page is displayed and home page is not displayed. अभी हम लोगों को एक यूनिक एलिमेंट लोकेट करना है एक पेज पे। हम ए पेज पे कौन सा भी एक यूनिक एलिमेंट लोकेट कर सकते हैं। हमने एक बटन लिया है, जैसे लॉग आउट करके बटन है, वो उसको हमने लोकेट किया है। अगर लॉग आउट बटन अगर डिस्प्ले हो गया तो हमारा होम पेज डिस्प्ले हो गया है, और इसके लिए हमने इफ की कंडीशन यूज़ की है। अगर हमारा बटन लॉग आउट बटन डिस्प्ले नहीं हुआ तो होम पेज भी डिस्प्ले नहीं होगा, और ये हमने ऐसे कंसोल पे मैसेज प्रिंट किया है। Now we have to see the from some web element method like isDisplay. What is isDisplay method? Also, interviewer can ask that tell me the different method of the web element interface. So isDisplay is the method of web element interface which is used to check whether element is display or not. If the element is display, it return true, and if it is not displayed, then it return the false. नाउ देयर इज अ सेकंड मेथड इज एनेबल। ये भी मेथड हमारी वेब ड्राइवर की मेथड है, वेब एलिमेंट की मेथड है। अगर एलिमेंट एनेबल होगा तो हमको ये रिटर्न ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एलिमेंट डिस्प्ले नहीं होगा तो हमको फॉल्स करेगा। मतलब ये जो मेथड देख रहे हैं अपन, इज एनेबल इज डिस्प्ले, एक ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। इट विल रिटर्न द बुलियन व्हॅल्यू रिटर्न करेल, आणि बुलियन व्हॅल्यू इफ ही रिटर्न द बुलियन व्हॅल्यू, then it will return like true or false format. Now the next method is the send key. Send key means it is a method of the web element interface which is used to enter any text in the text box or the text area. एक जो मेथड है ये हम किसके लिए यूज करते हैं? अगर हमको एक टेक्स्ट बॉक्स होगा नहीं तो टेक्स्ट एरिया होगा, उसके थ्रू हमको टेक्स्ट एंटर करना है तो हम सेंड कीज मेथड यूज करेंगे। और व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द सेंड की? देन इट इज वाइट। ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। क्लियर ए बी मेथड एक वेब एलिमेंट की मेथड है। इट इज यूज टू क्लियर द व्हॅल्यू, मीन्स कोई भी टेक्स्ट एरिया की अगर व्हॅल्यू क्लिअर करनी है, कोणत्या पण टेक्स्ट बॉक्समधली जर आपल्याला व्हॅल्यू क्लिअर करायची असेल तर आपण क्लिअर मेथड यूज करतो, विच इज द मेथड ऑफ द वेब एलिमेंट मेथड, अँड इट also return nothing, means its return type is a void. Now we have to see the isSelected method and the getAttribute method. Both method is a important method, and both method are the web element method interface. दोनों भी मेथड वेब एलिमेंट इंटरफेस की मेथड है ये। अभी हमको ई सिलेक्टेड मेथड यूज करना है तो हम देखेंगे कि जो हमारा एलिमेंट है ये सिलेक्टेड है क्या नहीं है। ये सीन करने के लिए हम ई सिलेक्टेड मेथड यूज करते हैं। जसं की रेडिओ बॉक्स हा सिलेक्ट झाला आहे का, चेक बॉक्स हा सिलेक्ट आहे की नाही आहे, हे आपण बघण्यासाठी पण ई सिलेक्टेड मेथड यूज करतो। ई सिलेक्टेड मेथड इज अ मेथड ऑफ द वेब एलिमेंट इंटरफेस, अँड या मेथड पण बुलियन व्हॅल्यू रिटर्न करतात। जसं की जर एलिमेंट सिलेक्ट असेल तर ते ट्रू रिटर्न करेल, आणि एलिमेंट सिलेक्ट नसेल तर ते फॉल्स रिटर्न करेल। If the element is selected, it will return true, otherwise it will return false. Now the next method is a getAttribute method. getAttribute method is also web element interface. ये भी मेथड वेब एलिमेंट इंटरफेस की है, getAttribute, आणि हे पण एक बुलियन व्हॅल्यू रिटर्न करते। if it return the which return the value of specified attribute, मीन्स हमको एक पेज का एट्रीब्यूट की वैल्यू वहाँ पे पास करना है। जैसे ड्राइवर डॉट गेट वैल्यू, यहाँ पे डबल कोटेशन पे हमको कोई भी एक एलिमेंट की वैल्यू और एट्रीब्यूट की वैल्यू यहाँ पे देना है, एट्रीब्यूट नेम देना है। तो ये हमको एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में उस एट्रीब्यूट की वैल्यू रिटर्न करेगा। We have to use a driver.getAttribute, and here we have to pass the any attribute name, then it will return the attribute value of the that particular attribute. Get text, it will retrieve the get text of the element. Get tag name also, it is a method of web element which return the tag name of the any element in the form of the string. Click and submit.
This difference is also important regarding interview, that is what is difference between the click and submit. Click is a method of the web element interface, submit is a method also web element interface, but the main difference is when we perform any click operations on any element, it will perform the click operation. When we perform any submit operation on the any button, it will perform the submit operation. But the difference is that when we use the submit, then its type is a button, sorry, its type is a submit, and this submit is a button is a present within a form tag. Within a form tag means the first condition is button is present within the form tag, and second condition is type equal to submit. दोनों का डिफरेंस क्या है? क्लिक और सबमिट में दोनों ऑपरेशन क्लिक के लिए परफॉर्म होता है, सबमिट के लिए भी, सबमिट थ्रू भी हम क्लिक कर सकते हैं और क्लिक के थ्रू भी हम क्लिक करते हैं. बट द डिफरेंस इज दैट सबमिट, ये जो सबमिट बटन है ये फॉर्म टैग में प्रेजेंट होना चाहिए और इट्स टाइप सबमिट होना चाहिए. Now the next interview question, how do you remove the value present in username text box without using clear method? अभी हमको यहाँ पे clear method use नहीं करना है. So पहले हम वो text box को locate करेंगे. First we will locate this text box using find elements method. Then we will use the send keys method, which is a method of the web element interface, and in send keys method we will pass the keys dot control plus a एंड कीज डॉट डिलीट. जैसे हम कीज डॉट कंट्रोल मीन्स कंट्रोल की बटन प्रेस कर रहे हैं हम विद द हेल्प ऑफ कीज. की इज अ क्लास एंड और वो की क्लास में कंट्रोल और डिलीट ये जो मेथड है. जैसे कि हम कीज डॉट कंट्रोल में कंट्रोल बटन प्रेस कर रहे हैं, कंट्रोल प्लस ए करके हमने वो टेक्स्ट सिलेक्ट किया है, और कीज डॉट डिलीट मीन हमको कंट्रोल डॉट ए सिलेक्ट करने के बाद हमको वहाँ पे डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है. सो यहाँ पे हमने यूज किया है कीज डॉट डिलीट. As we know, we have to perform the operation without using the clear method, which is a method of web element interface. For that we are using the first send keys method, send keys, and here we have to pass the keys dot control. Key is a class and which contain the control method. Keys dot control means we press the control button, then we have to press the a button. Keys dot control dot a means we will select the text this, and after selecting this text we have to perform the delete operations. Mean delete, we have to press the delete button, that also we will use the key dot delete. Now the next interview question, that write a script to print the tooltip text of the checkbox on the login page of application. So tooltip अगर हमको कौन सा भी टेक्स्ट रिट्राइव करना है तो हम मतलब कौन सा भी टेक्स्ट रिट्राइव करना है और कौन से भी वेब एलिमेंट की मेथड रिट्राइव करनी है. इफ यू हैव टू रिट्राइव any web element from any web element like text box, radio button, or any value which is present on the web page, that time we use the get attribute method, and get attribute method is the method of the web element interface. So first we will locate this particular checkbox with the help of driver.find element, then we will use the get attribute method on that particular web element, and we will retrieve the title ऑफ दैट पर्टिकुलर टूल टिप. टूल टिप मीन एक ऐसा है कि वहाँ पे एक छोटा चेक बॉक्स रहता है, यहाँ की वैल्यू हमको रिट्राइव करनी है. with the help of get attribute method we will retrieve the tooltip text and we will print this tooltip text with the help of using system.out.println. Now we have to see the username text box is enable or not, ये हमको सीन करना है. तो उसके लिए भी फर्स्ट वी विल लोकेट द यूजर नेम विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर डॉट फेट्स फाइंड एलिमेंट. अभी हमको इज एनेबल मेथड यूज करना है. नाउ वी हैव टू सी द यूजर नेम बटन इज एनेबल और नॉट. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इज एनेबल मेथड. इज एनेबल मेथड रिटर्न द वैल्यू इन द ट्रू और फॉल्स. If username text box is enabled, then it will return the true, or if username button is not enabled, then it will return the false.
ऑल्सो हम कंसोल पे मैसेज भी प्रिंट कर रहे हैं, अगर ये इनेबल होगा तो यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स इज एनेबल ऐसा मैसेज शो होगा. इफ इट इज नॉट एनेबल दे नीड टू डिस्प्ले द मैसेज लाइक यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स इज नॉट डिस्प्ले. अभी हमको प्रिंट द वर्जन ऑफ द लॉगिन पेज मीन्स एनी वैल्यू अपने को टेक्स्ट बॉक्स की एक वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हमको यहाँ पे मेथड है गेट टेक्स्ट which is the method of the web element method. So first we will locate that particular text box and we will retrieve the this text box message or text box element with the help of get text method. Now the next questions, we have to perform the different operation to click on the button or any link. So there is a different method like click method, send keys method and submit method. Also we can using action class we can perform the click operation. Also we have by using javascript executor also we perform the click operations on any button or any link. So first we will see using click method. Using click method, first we have to locate that particular element and we locate this element. अभी हमने ये locate element locate किया है. So पहले हम देखेंगे click method. Click method के लिए हमको डायरेक्ट click method को कॉल करना है मेथड को लोकेट करने के बाद. मीन्स if you have to use the click method, so driver dot find elements, यहाँ पे हम यहाँ हम element locate करेंगे. Here we locate the element and use the click method. If this button or if this link is present within the form tag and its type is a submit, then that time we will use the submit method. Because when we use the submit method there is a two condition that it should be satisfied. First is it is present within the form tag and its type is a submit. If it is satisfy the all or if it is fulfill the all condition, then we will use the submit method. And also submit method we can use the any click operation on any button or any link. So for that we have to locate the element and call the submit method. Then last is the send keys method. As we see in the previous question, when we use the send keys, we have to use the keys class and here we have to perform the enter operations. Means keys dot enter. Now we will see the next topic, JavaScript executor. JavaScript executor is an interface which contain the two method like execute script and execute asynchronous script. In Selenium, we can't use the execute asynchronous script method. So now the question is why we use the JavaScript executor. If the Selenium is failed to perform the operations on any web page, that time we use the JavaScript executor. So in JavaScript executor, first we will see write a script to enter the text in the text box which is in the disable mode. So our question is form like if the text box is in hidden mode, how will you check? That time we also see the we use the JavaScript executor. So first we have to give the path of the WebDriver. Then we have to initialize the WebDriver. Then we have to open the web page with the help of driver.get. Then now we have to typecast the object to the JavaScript interface because we can't create the object of interface. So we will typecast our driver to the JavaScript interface by following this syntax, that is JavaScript executor JS, JavaScript executor and driver. Then we have to call the execute script method of the JavaScript executor interface js.execute script, and here we have to locate the element, and here we are locating element with the help of value, that is attribute value. Now we have to clear the value of the text box. So js execute script and document dot get element by id t2 id ये जो element की id है जो t2 है उसकी value को हम clear कर रहे हैं by writing double quotation. In this way we clear the text or clear the text from the text box. The first text box is active and the second text is inactive, and both the text box our approach is same.
that is js.execute script document.get element by id. Here we have to write the by id like t2 t1, and we have to give the value like manager. In this we enter the value manager, and in this we clear the value by using double quotation. Now the next question is, what are the uses of JavaScript user? So to scroll on the web page means, if we have to scroll up or scroll down the page, that time we use the JavaScript executor. To handle the disabled element, or to use the alternative solution when Selenium inbuilt method like clear, click, send keys doesn't work. So in Selenium, we don't have any method to scroll up or to scroll down the web page. In such case, we use the JavaScript executor. So we will see the how to scroll up or how to scroll down the page in the Selenium. So first we will use system.set property, and here we will set the property and executable file path. Now we will use the driver.get to open any URL. Then we have to typecast the driver into JavaScript executor, because JavaScript executor is an interface and we can't create the object of the JavaScript executor. Now we have to perform the scroll down operation. Scroll down means, for that we will call the js.execute script and windows.scroll by 0 100. If we give the 0 and 1000, this value is in the positive value, so it will scroll down our web page. And if we use the window to scroll by like 0 and minus 1000, if we use the negative value of integer like minus 1000, if we give the 1000 value, then it will scroll down, and if we give the negative value, then it will the scroll up the page. In this way we scroll down or scroll up the page. Now the next question is, we have to scroll down to the specific element. So for that, there is a method in the JavaScript executor that is scroll into view. Here this method is not explained, so I will write this JavaScript executor JS JavaScript executor driver, means we will typecast our driver to the JavaScript executor, and here we have to write js.execute script in bracket scroll onto view. Here we have to pass the element. By this syntax, we will scroll into a particular element. Now the next interview question, when we go for the JavaScript executor, when Selenium method fail to perform any action on the web page, that time we use the JavaScript executor. Next question is, how do you use the JavaScript executor? So we typecast our driver object to the JavaScript executor interface, and once we have the reference variable, we call the execute script method, to which as an argument we pass the actual JavaScript statement. Next question is, how do you get the JavaScript statement from the browser? So right click any on the page and click on the inspect, then navigate to the console tab and write their code JavaScript executor JS is equal to JavaScript executor driver. This is the syntax of the typecasting our driver to the JavaScript executor. Then we have to call the that method execute script, js.execute script and document.get element by id. So we have to inspect that id from the DOM, and we have to give the value of admin.